my shining stars. I hope you all are doing good and enjoying the journey of your Hindi course book Saral Hindi Pathmala with your teacher Aprajita. So children, ready to start a new chapter today? So let's start chapter number 9, Badal, Clouds. And this is a poem, children. So let's enjoy this poem. दूर देश से आते बादल, काले बादल, भूरे बादल. These black clouds and grey clouds, they come from far distant land. आसमान में घूमा करते पागल से मतवाले बादल. And these crazy clouds, they just roam around in the sky. They are just crazy, they are very crazy and they just roam about in the sky. बजा बजा कर ढोल नगाड़े सज धज कर हैं आते बादल. And these clouds, they just come very well dressed up and they come with the sound of the drums. झूम झूम कर मोर नाचते उमड़ घुमड़ जब छाते बादल. And when these clouds are in the sky, the peacocks, they just start dancing all around. See, the peacock start dancing when it sees the clouds in the sky. सागर से गागर भर लाते झमझम जल बरसाते बादल. And these clouds, they fill the pitcher, they fill their pitcher with water and they just pour down the water in the form of rain. धरती पर हरियाली लाते सबकी प्यास बुझाते बादल. And these beautiful clouds, they just bring greenery all around on the earth and they quench the thirst of the people of the earth. So, how beautiful and how important these clouds are, children. So, wasn't it a nice poem? What did you learn from this poem? सबके मन को प्रसन्न रखना, to keep everyone pleased, to keep everyone happy. हंसी खुशी से रहना and to live happily. These clouds, they make us learn this only, they show us this only, how to be happy. Now the word meanings here, matwale, crazy, gagar, pitcher, nagada, drums, sagar, sea. The exercise here, children. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. Answer the following questions. कविता में किनका वर्णन किया गया है? What has been described in this poem? About whom has been told in this poem? What has been described? About the clouds. किसका वर्णन? बादलों का. बादलों का. बादल कैसे कैसे हैं? कैसे कैसे हैं? मतवाले हैं, काले हैं. बादल कैसे हैं? काले हैं, भूरे. सबकी प्यास कौन बुझाते हैं? बादल सबकी प्यास बुझाते हैं. They quench, these clouds, they quench the thirst when they pour down in form of rain. Now take the correct option. दूसरे देश से कौन आते हैं? What comes from the distant land? पक्षी, बादल, पंख. बादल. The clouds come from the distant land. झूम झूम कर कौन नाचते हैं? बच्चे, तोते, मोर. Who start dancing when they see the clouds? The peacock, मोर. What's next? बादल पानी कहाँ से लाते हैं? सागर से, कुएं से, घड़े से. They fill the pitcher, the clouds, they fill in their pitcher from the sea. सागर से. धरती पर हरियाली कौन लाते हैं? बच्चे, मोर, बादल. The clouds bring greenery to the earth. So, tick on बादल. कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए. Now, complete the lines of the poem. So, for this, what you have to do, children, you have to go through the poem again, read the poem thoroughly and then fill in the lines here to complete the poem. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. Answer the following questions. बादल कहाँ घूमा करते हैं?
Where do they roam around? Where do these clouds roam around? बादल कहाँ घुमा करते हैं? आसमान में, in the sky, आसमान में। बादल कैसे हैं? बादल कैसे हैं? काले हैं, काले और भूरे। बादल कैसे आते हैं? बादल कैसे आते हैं? उमड़ घुमड़ कर, उमड़ घुमड़ कर, उमड़ घुमड़ कर। बादल सागर से क्या भर लाते हैं? बादल सागर से गागर भर लाते हैं। क्या भर लाते हैं? गागर। सबकी प्यास कौन बुझाते हैं? सबकी प्यास कौन बुझाते हैं? बादल। निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। नाउ वी हैव टू राइट 3 synonyms of each of the following words. So now let's write down the 3 synonyms of the given words. बादल, घन, मेघ, जलधर. Okay? Moving ahead. Okay children, now let's write down more synonyms of the given words. आसमान, आकाश, नभ, अंबर. Then मोर, पीकॉक, मयूर, नीलकंठ, श्रीपुंज. सागर, सी, समुद्र, जलधि, रत्नाकर. धरती, अर्थ, भूमि, पृथ्वी, जगत. Okay? Now make words. Here few words are given and here one word is given. We have to join them and make new words. Ana, it becomes ana, to come. Bharna, bharna means to fill. Okay? Jhoomna, write down jhoom. Jhoomna means to sway in joy. Jalna, jalna, to burn. Bujhna, bujhna. शुद्ध शब्द पर गोला बनाइए. Circle the correct word. देश, देश, देश. This is the correct word. आसमान, असमान, आसमान. No, it's आसमान. डोल, ढोल, ढोल. This is the correct word. ढोल. मोर, मोर, मोर. It's मोर. धरती, धरती, धरती. This is the correct word. Okay? What's next? निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए. Translate the following sentences into Hindi. Clouds come from distant lands. बादल दूर देश से आते हैं. बादल दूर देश से आते हैं. Clouds are coming in full swing. बादल झूमते हुए आते हैं. झूमते हुए आते हैं. Okay? The clouds bring water from the sea. बादल सागर से जल लाते हैं. And the last one is the clouds are dark and grey. बादल काले व भूरे हैं. Okay children? Now we move further. दो बच्चों की बातचीत ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूरा कीजिए. Now here is a conversation. Read and complete the conversation between two children. Shiva and Kanchan. They both are talking. पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? What is the greatest source of water on the earth?
Now Kanchan replies, बादल So the question was, पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? पृथ्वी पर बादल जल का सबसे बड़ा स्रोत है. बादल जल का सबसे बड़ा स्रोत है. Fine. Kanchan replies this. Now Shiva says, लेकिन कैसे? But how? कंचन, समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर जाता है, ऊपर जाकर ये ठंडा हो जाता है, फिर बादल बनते हैं. यही बादल मैदानों और पहाड़ों पर बरसते हैं. Now Kanchan replies, ocean water evaporates and goes above, then there it cools down and make the clouds. Then these clouds rain on the hills and the fields. Now Shiva, what does Shiva say? बादल जल बरसाकर धरती को हरा भरा बनाते हैं. Now Shiva replies that these clouds, then when they rain, they make the earth green all around. So here was the conversation between these two friends. Now we come to the creative expressions. Think and tell children, भारतवर्ष में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? Where does it rain the most in India? Cherrapunji. Now the project work, वर्षा से हमें क्या लाभ है? एक सूची बनाइए. Now what you have to do, what are the advantages of the rain for us? You have to list them out. क्या क्या advantages हैं? What are the advantages which you get from the rains? Now let's do and see. वर्षा ऋतु पर एक अनुच्छेद लिखिए और अपने अध्यापक को दिखाइए. Now you have to write a paragraph on the rainy season and show it to your teacher. What all happens in the rainy season, why this rain is important for the earth, do you enjoy the rain, what do you do when the rain is there? So that all you have to write down in this paragraph. So children, stay tuned for the new video. We'll meet soon with what? With a new chapter, and we'll enjoy the chapter in the same way we have done till now. So children, till then, be happy and keep learning. Bye.